Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme, Levels of Intervention, with special reference to remedial intervention. As in previous lecture, we have already discussed it. First intervention, I mean to say you preventive intervention. प्रिवेंटिव इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन होता है जो डिसेबिलिटी और डिजीज से पहले दिया जाता है. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल प्योरली फोकस सेकंड इंटरवेंशन दैट इज नोन एज रेमिडियल इंटरवेंशन. रेमिडियल इंटरवेंशन डिजीज और डिसेबिलिटी के बाद दिया जाता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट remedy simply means to find the solution of the problem. Question arises, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढना है? जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, we have to find the solution of the problem or problems which are facing by the exceptional children. जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या हम कह सकते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करना है, उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना है बाय प्रोवाइडिंग द रेमिडियल इंटरवेंशन. इसीलिए मेन पर्पस ऑफ रेमिडियल इंटरवेंशन इज टू रिड्यूस और एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी. चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेंसरी डिसेबिलिटी है या और कोई डिसेबिलिटी है. नाउ द फॉलोइंग हेडिंग्स विल डिस्क्राइब व्हाई रेमिडियल इंटरवेंशन इज गिवन. नंबर 1, डेवलप एकेडमिक स्किल्स. In order to develop the academic skills, remedial intervention is given, especially academic skills like 3Rs. 3Rs means reading, writing and arithmetic. क्योंकि जो disabled बच्चे हैं, due to one reason and second reason, they are facing the problems. तो उनके लिए बहुत कठिन होता है to perform well in the academic field. इसीलिए जो भी differently abled बच्चे हैं, especially the disabled ones, चाहे intellectually disabled है, locomotor disabled है, sensorily disabled है, sensorily disabled में visually impaired आते हैं, hearing impaired, by and large speech impaired. इन तमाम बच्चों को डेवलप करने हैं 3Rs. 3Rs means reading, writing and arithmetic. Number 2, develop personal skills. Main focus of remedial intervention is to develop the personal skills. We have to develop the personal skills among the disabled children, especially among intellectually disabled and learning disabled. As in previous lecture, we have already discussed it. Intellectually disabled बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनमें cognitive deficits होते हैं और cognitive deficits की वजह से वो हर एक फील्ड में पीछे रहते हैं. They are facing number of problems in the field of life skills, academic skills और performing the day-to-day tasks. इसीलिए रेमिडियल इंटरवेंशन के तौर पे हम इन बच्चों में चाहे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है या लर्निंग डिसेबल्ड है, वी विल डेवलप पर्सनल स्किल्स. पर्सनल स्किल्स लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, डेंटल हाइजीन, नेल हाइजीन, combing the hair, using the toilet without the support or assistance. इस तरह से हमें इन बच्चों में
कैपेसिटीज और कैपेबिलिटी डेवलप करनी है ताकि ये फिर इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ स्किल्स को कैरी ऑन करेंगे, चाहे नेल हाइजीन मेंटेन करनी है, डेंटल हाइजीन मेंटेन करनी है, बॉडीली हाइजीन मेंटेन करनी है, चाहे ड्रेसिंग सेंस डेवलप करना है, हाइजीन का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, या और कोई लाइफ स्किल। नंबर 3, डेवलप सोशल स्किल्स। Dear students, with the help of remedial intervention, we have to focus also social skills among the differently abled, or we can say that special children. Social skills like strong communication, empathy, patience, humor, teamwork, cultural sensitivity, self-expression, independence, so on and so forth. As we know that जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, especially the intellectually disabled, learning disabled and hearing impaired. इन तीनों कैटेगरीज में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है ड्यू टू द डिसेबिलिटी। तो इसीलिए इन बच्चों में कम्युनिकेशन डेवलप करनी है। अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज, communication ability should be developed also among other categories like orthopedically impaired, visually impaired, so on and so forth. अब क्यों प्रॉब्लम होती है ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड में कम्युनिकेशन? बेसिकली उनमें कम्युनिकेशन में कोई फॉल्ट नहीं है, बट दे आर फीलिंग वेरी मच शाई, दैट्स व्हाई दे रन अवे फ्रॉम द कम्युनिकेशन। डिसेबिलिटी की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपनी डिजायर्स और विल्स और विशेस को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इन बच्चों में भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एबिलिटी डेवलप करनी है। जो ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड बच्चे हैं और विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं वो हाईली इन्फ्लुएंशियल मोटिवेशन स्पीकर्स बन सकते हैं, क्योंकि नेचुरली उनमें कम्युनिकेशन एबिलिटी है, लेकिन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी, चाहे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या विजुअल डिसेबिलिटी है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। इनमें एक्सप्रेशन, आई मीन टू से यू सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत कमजोर होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इंडिपेंडेंस, वी हैव टू ऑल्सो डेवलप द सोशल स्किल ऑफ इंडिपेंडेंस। ड्यू टू द डिसेबिलिटी, these children are not performing the tasks independently. So we have to provide the remedial intervention so that they can live their life independently. वो अपनी life independently जी सकते हैं with courage and confidence. Number 4, develop vocational skills. Dear students, also due focus and importance should be given on development of vocational skills. As we know that vocational skills वो skills होते हैं which supports to the disabled children or exceptional children to earn their bread and butter. इन्हें अपने टांगों पे खड़ा करना है। They should independently perform different types of tasks. We have to develop the vocational skill competency among the disabled children so that they can become the bread earners. ये ब्रेड अर्नर्स बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इट इन द माइंड, वोकेशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए वी हैव टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द एप्टीट्यूड टेस्ट्स, इंटरेस्ट टेस्ट्स एंड अदर साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, बिकॉज विदाउट द इंटरेस्ट्स, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों में वोकेशनल स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स को ड्यू इंपॉर्टेंस देना, especially interest and aptitude tests. Keeping in view the special education and inclusive education, priority बुनियाद पे हमें किन वोकेशनल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, such as painting, tailoring, woodwork, metal working, leather working, music, photography,
gardening, digital marketing, by and large, e-commerce. These are the various vocational skills which should be developed among the differently abled children or specially abled children. Number 5th, provision for training and equipments. Dear students, there should be the complete provision for training and equipments so that disabled children, या हम कह सकते हैं exceptional children, they can overcome their problems and fulfill their needs and requirements. Disabled बच्चों की जो problems है, especially जो disabled बच्चे problems face करते हैं in the field of education. Educational problems से deal करने के लिए we have to provide the training and equipments so that needs and requirements can be fulfilled and by and large the problems can be controlled. हम उनकी problems को control या eliminate कर सकते हैं. For instance, blind children need braille training. The low vision children need large print materials, magnifying glasses, and visual materials. The deaf children need hearing aids and speech trainer. The mentally retarded children need play materials and other concrete objects. The learning disabled children need alternate learning materials and workbooks. The gifted children need advanced learning materials and encyclopedias. Number 6, provision of inclusive education. Dear students, inclusive education is that education in which exceptional children, जिन्हें हम differently abled children भी कहते हैं, has to provide the education with the normal children. Normal children और exceptional children को एक ही setting में education देनी है. I mean to say you within the same classroom. जो gap है in between the normal children and exceptional children, especially the disabled ones, उस gap को bridge करना है. And it is only possible when we will create the inclusive platform. That is why remedial intervention is given. Remedial intervention believes there should be overall restructuring of the school system. हमें school system को alter करना है, modify करना है, यानी कि school system को, I mean to say you whole education system को eco-friendly बनाना है. It means it should be beneficial for all disabled children vis-a-vis the normal children. It is already highlighted by the Act. That Act is known as 1974 Act, which is entitled as Integrated Education for Disabled Children. Dear students, this was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss third important intervention, which is known as compensatory intervention. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.